नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी RKV और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप गंभीर जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों कहां पर हैं? नेशन नाउ पर। जी हाँ, और नेशन नाउ हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। हर हर महादेव, जय सिया राम। प्रदीप जी, अब राम मंदिर की हवा चल रही है। एग्जैक्टली। अब मुझे नहीं लगता कि जहाँ तक इंडिया अलायंस का प्रश्न है, इंडिया अलायंस के पास कोई जवाब है इसका। कुछ भी कर लो नहीं है, क्योंकि देखिए साहब 143 143 MPs ऑफ द ऑपोजिशन, दैट इज नॉन बीजेपी पार्टीज, वर सस्पेंडेड। निलंबन किया गया 143 विपक्ष के सांसदों का। अगर ये पहले वाली कांग्रेस होती तो अभी तक तो भारत बंद हो जाता। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। और कुछ तो होता। यहाँ पे छोटी मोटी आपने थोड़ी थोड़ी रैली इधर उधर कर दी, विच वर ऑल्सो पैथेटिक बाय द वे, आई सॉ। जहां पर लाखों लोगों की भीड़ आनी चाहिए थी वहां पर कोई भी नहीं आया। हाँ, आप ये बोल रहे हैं कि नागपुर में क्योंकि 28 दिसंबर को कांग्रेस का फाउंडेशन डे है, वहां पे यू आर एक्सपेक्टिंग 1 million people, that is 10 lakh people. That's neither here nor there, that's only one occasion. By now you should have had at least 4 to 5 lakh people घेराविंग parliament, or at least registering your presence in Delhi, at least registering your protest if you think that what has been done to you is unjust. लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय नहीं हुआ है तो उसका रिएक्शन सामने है। प्रदीप जी, सड़क से संसद तक, दैट इज द कांग्रेस कैंपेन विद द इंटेंट टू डू, बट एज यू से दे हैव टू डू इट फास्ट। जैसे 30 दिसंबर के बाद करेंगे, कभी करेंगे। आई मीन यू कांट हैव इट डिलेड। नाउ यू नीड, इफ देयर इज अ चेंज, you need to feel the change. The people should feel the change. 2013 end, we felt the change. The whole country felt the change. Everybody knew that the new government is coming and Mr. Modi is coming to power. We need, I mean, if the Congress wants to develop, the India Alliance wants to develop something, a feeling, they need to create that feeling across the country that something is, there's a change in the air. Sharad Pawar ji बार बार बोलते हैं there's a change in the air, you can feel the change in the air, but actually nobody is feeling the change in the air. There is no change. There is no change in the air. There is one change. There is one change, and which is we can see how weak the opposition has become. आज की तारीख में even AJIT दादा पवार is effectively laughing at the Congress. Exactly sir. जो उन्होंने कहा कि कहाँ खड़गे और कहाँ हम नरेंद्र मोदी, मतलब कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, मतलब यही हुआ ना। मतलब this is, I have never seen the Congress in such a pathetic condition. Very frankly, I thought after the Bharat Jodo Yatra, success of the Bharat Jodo Yatra, I thought the Congress organization had been resurrected, rejuvenated, re-energized. I don't see anything happening. Do you see anything Sir, happening? the only consensus that the India Alliance built is in the name India. Yep. India पे उनके consensus है, बाकी कोई चीज में उनके consensus नहीं है। बस they have come together, they don't have a common minimum program, they don't have a vision, they don't have a convener, they don't have a candidate for the PM. We can excuse the candidate of PM not there, ठीक है, बाद में कर सकते हैं, इतिहास है कि कांग्रेस बाद में भी किया है, but at least you have a convener for your, who's going to charter, coordinate all the programs. सर कांग्रेस ने बाद में कभी नहीं किया, एक ही बार किया, हाँ, नरसिम्हा राव के बाद किया। Yes, yes. जी। But the point here is, look at the BJP का तैयारी देखो, राम जन्मभूमि का उद्घाटन का तैयारी नरेंद्र मोदी जी दिसंबर से शुरू कर रहे हैं, सब जगह विजिट, अयोध्या ठीक है कि नहीं, the entire airport in Ayodhya is going to be ready, 100 aircrafts are going to be there on 22 जनवरी, जो हम लोग बार बार कह रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठान जब होगा, 100 aircrafts carrying people are going to be in Ayodhya. Everything has been planned. Everything is planned to a T. I mean everything, hour by hour, second by second. As Vishwa Hindu Parishad said, this is a celestial event. एक celestial event है जहाँ पूरे the whole universe is waiting to be guest, witness to this episode, which is going to be a event of the entire universe. अखंड ब्रह्मांड जो बोल रहे हैं, अखंड ब्रह्मांड, पृथ्वी और स्वर्ग इसका साक्षी रहने वाला इतना बड़ा एक इवेंट हो रहा है। राम लल्ला, राम राज, भगवान राम अपने लोगों से मिलने के लिए आ रहा है। And everything is what I'm trying to say. Everything is planned. ऑफिशियली अगर देखा जाए, आधिकारिक तौर पे अगर देखा जाए ऑफिशियली, तो 496 साल के बाद रामलला अपने घर लौटेंगे। Exactly. असल में 550 साल के बाद। अमित शाह कह रहे 550 साल। वो गलत नहीं बोल रहे, नहीं ऑफिशियल, वो ऐसा है, वो गलत नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उसके 50 साल पहले ही
मुगलिया शासन शुरू हो गया था, मुगलिया नहीं, मुगलिया शासन चलिए आप फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद ले लें, लेकिन उसके पहले भी यहाँ पर इब्राहिम लोदी का राज था, सिकंदर लोदी का राज था, और उसके पहले द होल slave dynasty was there, Sultan's Turks and everybody from the Seljuk Turks were there, उसके बाद द खिलजी डायनेस्टी was there। तो मेरा ये कहना है कि 550 बरस का जो आंकड़ा अमित शाह जी ने दिया है वो गलत नहीं है, और आज की तारीख में इंडिया अलायंस के पास मतलब कोई जवाब नहीं है, मेरा ये कहना है। Which is why Mr. Ajit Dada Pawar was able to speak with such confidence, where he said एक तरफ मतलब नरेंद्र मोदी है और उनके सामने आप मल्लिकार्जुन खड़गे खड़ा कर रहे हैं, क्या मतलब। और खड़गे साहब भी मना कर दिया, बोला कि मैं इसके लिए सहमति नहीं दे रहा हूं अपना, आई एम नॉट एग्रीइंग टू दिस। आपने प्रपोज किया बट आई डोंट, बिकॉज देयर ओन पार्टी द कांग्रेस हैज नॉट पुट अप मस्ट टिक ऑन दैट, द कांग्रेस नॉट अप्रूव्ड इट। So Congress was spent, stumped by this particular offer by Trinamool Congress, Mamata Banerjee and Kejriwal. They in fact stumped, and Kejriwal, I think Mallikarjun Kharge was probably embarrassed. बोले ये तो एजेंडा में नहीं है, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाने, आपने एजेंडा ठोक दिया क्या? मतलब मुझे सूली पे क्यों चढ़ा रहे हो? yes, yes. मेरे सामने मेरे लीडर बैठे हैं भाई, सोनिया जी बैठी हैं सामने, राहुल गांधी बैठे हैं, माफ नहीं करेंगे। खैर एनीवे, वी हैव मिस्टर मुकेश गांधी ऑफ द एनसीपी एट द मोमेंट विद अस, अजीत दादा पवार ग्रुप। मुकेश गांधी साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाउ आर यू सर? हाउ आर यू? बस हैप्पी नमस्कार सर। बाय द वे टुडे इज प्रदीप जी बर्थडे, यू कैन विश हिम हैप्पी बर्थडे। अरे विश यू हैप्पी बर्थडे। देखिए आप कितने नसीबदार है प्रदीप जी कि मुझे आपके नाम के साथ कवि प्रदीप जी भी याद आ गए हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और आज देखो कैसा अवसर है कि आज भगवद गीता जयंती है जी, और प्रदीप जी का जन्मदिन है। और भगवद गीता ने एक ही बात कही है कि स्वधर्म अपि चावेक्षण विकम्पितु महर्षि, हमें धर्म को झगड़ा नहीं करना है जी, पर हमारे स्वधर्म को जानना है, और फिर बाद में तस्मात् युद्धाय कृत निश्चय। अभी सारे हिंदुस्तान के लोगों को अमित शाह जी और मोदी जी ने जो बनाए हुए नए कानून जो है उनके साथ में जुड़ करके युद्धाय कृत निश्चय और फिर बाद में यशो लभस्व, ये गीता के मंत्र हमको मिलेंगे। क्या बात है सर, जबरदस्त जबरदस्त। लेकिन थैंक यू। लेकिन जिस प्रकार अजीत दादा पवार ने आज कहा कि भाई हाँ जी, कहाँ मोदी जी और आप उनके सामने मल्लिकार्जुन खड़गे को खड़ा कर रहे हैं, मतलब कोई कुछ मेल बनता नहीं है ना सर। मतलब अजीबोगरीब मसला है। व्हाट इज दिस अ कॉमेडी? दिस इज नॉट द कांग्रेस आई रिमेंबर। मतलब आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, गैर संवैधानिक तरीके से, गैर संसदीय तरीके से हमारे 143 लोगों को आपने निलंबित कर दिया। तो मेरा ये कहना है आज की तारीख में तो हर शहर में 2-2 लाख 3-3 लाख लोगों की भीड़ होनी चाहिए थी, प्रोटेस्ट रैलीज होनी चाहिए थी पूरे के पूरे हिंदुस्तान में। हमें तो कुछ दिखा नहीं, आपको दिखा कुछ मुकेश गांधी साहब? देखिए क्या है कि शेर के सामने तो बकरी तो कुछ काम नहीं कर सकती है, इसलिए वो मच्छर को आगे करती है कि जाके उसके कान में गुड़ 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 करो बस। इसके लिए खड़गे हमारे एक मच्छर बन के आ गए हैं जो सिर्फ खाली आवाज करेंगे, काम नहीं करेंगे। और यही बताते हैं कि इंडी का जो ग्रुप है वो पूरा हार गया है, हतप्रभ हो गया है और वो कुछ नहीं करता। क्योंकि मेरे हिसाब से तो अभी ये जो नए रेजोल्यूशन जो दिल्ली में राज्यसभा में पास हो गए इनको निलंबित करने के बाद में, उसमें मुझे लगता है कि अमित शाह जी ने और मोदी जी ने कई सालों के बाद मैकॉले की जो लाई हुई जो परंपरा थी उसके सामने हमारे देश को स्वदेशी चश्मा पहनाया है, स्वदेशी चश्मा पहनाया। और दूसरी बात, मोदी ने 19 की लड़ाई जो है ना वो उसने 190 साल की लंबी छलांग लगाई है। 190 साल से जो कानून चल रहे थे उनको इन्होंने मिटा करके हमारे देश को एक नई दिशा दिखाई है। ये सचमुच बहुत बड़ी बात है। दुरुस्त बात। लेकिन चलिए उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जो आज अजीत दादा पवार की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उनमें अजीत दादा पवार ने साफ तौर पर कहा है कि यही गुट मेरे साथ रहेगा, इसमें कोई स्प्लिट होने का सवाल ही नहीं है, जहां भी हम जाएंगे साथ में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है, ऐसा उन्होंने कहा है। और साथ में ये भी कहा है कि आचार संहिता जो है वो मार्च से लग जाएगी, तो अभी हमको बिल्कुल कुछ और बिना देखे फोकस करके अपना ध्यान सिर्फ विकास पर केंद्रित करके पूरे महाराष्ट्र का विकास करना पड़ेगा। मुकेश गांधी साहब।
एकदम सही बात था, मैं वहां हाजिर था और उन्होंने स्पष्ट उसके पहले की भी हमारी क्लोज डोर मीटिंग में भी यही बात कार्यकर्ताओं के साथ में दोहराई थी कि हमको बीजेपी के साथ रहना है और मोदी जी के दिए हुए कार्यक्रमों को हमें आगे बढ़ाना है और जन तक, पूरे कॉमन मैन तक वो प्रोग्राम, सब योजनाएं सब लेके जाना है और उनके हित में काम करना है और लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सीट एनसीपी के कोटे में जो आएगी उसको जीत के हमको लाना है जी। माने अजीत दादा ग्रुप इज टोटली कमिटेड विथ बीजेपी, Yes. नरेंद्र मोदी जी। Absolutely. And Yes. on the other side, we don't seem to have an opposition. मतलब opposition को मुझे लग रहा है, इनको ऐसा लगता है कि आपने अगर अलायंस बना ली तो जो एक होता है ना, जो बेसिक अरिथमेटिक होता है, 1 + 1 = 2 हो जाएगा, 2 + 2 = 22 हो जाएगा, सारे वोट इस तरफ आ जाएंगे। अरे कितनी बार कोशिश कर चुके हो, ऐसी अलायंस तो पहले भी बन चुकी हैं। आफ्टर ऑल प्लीज रिमेंबर, उत्तर प्रदेश में मायावती, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की अलायंस थी, क्या हुआ? आपने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटें जीत करके लाई। मुकेश गांधी साहब, हाँ, He's got a phone call. Mr. Mukesh Gandhi, I think, has got a phone call. He is got disconnected. He'll join again. Yes, sir. Yes, sir. But this is, as we say, 190 years in Indian Penal Code, CRPC, जो change करना है, enforcing a new change. We were still following the British laws. जो ब्रिटिश ने कानून यहाँ पर छोड़ के गए थे, उसी को फॉलो कर रहे थे। I want to see. Have you read it? I want to see what is the पंचनामा कानून। वो पंचनामा का जो रूल है वो हटाया कि नहीं हटाया, कि अभी तक वही है? The most important thing सर, सेडिशन हटा दिया जी। सेडिशन, But लोग से बोल रहे थे कि ये कानून इज आउटडेटेड, ये चेंज होना चाहिए। 124A, यस, 124A इज नॉट एज पर, कभी ब्रिटिश जमाने में ये वैलिड था, आज के जमाने ये वैलिड नहीं है। अभी हनुमान चालीसा पढ़ने पे लिए आप 124A लगाइए, सेडिशन के कानून लगा देंगे। किसी के बाहर, घर के बाहर मोर्चा करेंगे तो आप सेडिशन के चार्जेस लगा देंगे। तो बोथ द पार्टीज, द कांग्रेस एंड द बीजेपी, वो कंटिन्यूसली accusing each other of misusing this particular law. And nobody was trying to say that this law has to be changed. तो उसकी जगह पे UAP लगाएंगे अब। Yes, they brought new laws जो एक तो UAP है, but at least this government had the guts to change the laws. जब बोले कि हम लोग चेंज करेंगे, पुराने कानून को चेंज करेंगे, वो चेंज कर रहे हैं। This is 190 years of that. Right, I think Mr. Mukesh Gandhi is back. Yes. मुकेश गांधी साहब, हाँ जी, ये ऐसा नहीं है कि पहले अलायंस नहीं हुई है, अलायंस तो पहले भी हुई है। हाँ जी। इंदिरा जी जब प्राइम मिनिस्टर थी तब भी अलायंस होती थी और कुछ नहीं होता था उनका। आज भी अलायंस है, सिर्फ एक अलायंस काम करी है, वो जनता पार्टी की अलायंस काम करी है 1977 में। उसके अलावा किस अलायंस ने काम किया? मतलब अलायंस का मतलब ये नहीं कि 1 + 1 = 11 और 2 + 2 = 22। आफ्टर ऑल, एज आई वाज सेइंग, अखिलेश यादव, मायावती, बहन मायावती जी and Rahul Gandhi were in an alliance together in UP, and what happened in Uttar Pradesh? जी मुकेश गांधी साहब। हाँ जी, ये अलायंस है ही नहीं है, ये कमजोर लकड़ियों का एक इकट्ठा गट्ठा है जी। वो हर लकड़ी अगर अलग रहेगी तो टूट जाएगी, इसलिए लकड़ियों को गट्ठा बना दिया इन्होंने जी। और उसके ऊपर इंडिया नाम का एक लेबल बना के उसको बांध के रखा है। पर आपको मैं बता दूं कि धीरे धीरे एक एक लकड़ी निकल जाएगी और पूरा गट्ठा छूट जाने वाला है। सिर्फ खाली मोदी जी का, बीजेपी का झंडा ऊपर हिंदुस्तान में लहराने वाला है। जी, दुरुस्त बात है। मुकेश गांधी साहब, नाउ अजित पवार जी टॉक्स अबाउट कंस्ट्रक्टिव लीडरशिप, एकदम स्पेसिफिक लीडरशिप, एक लीडरशिप जो विजनरी है। आपने वही बात किया कि यू गॉट अ विजनरी लीडरशिप। आपने 190 इयर्स कानून का बदलाव, जो ब्रिटिश के जमाने के कानून अब तक चल रहे हैं, इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी, आपने बोला दे हैव चेंज, सेडिशन लॉ को चेंज कर दिया। ये लॉ कानून की बात हो गई। 550 साल से जो मंदिर टूटा हुआ था, आज 550 साल के बाद राम जन्मभूमि, राम मंदिर को पुनर्निर्माण हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठान 22 जनवरी 12:22 और पूरे प्लानिंग तैयार है अयोध्या में। और पूरे जितने संगठन है, वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद कह रहा है कि अखंड ब्रह्मांड, पृथ्वी और पूरे अपने स्वर्ग इस राह को देख रहा है कि कभी भगवान राम वहां प्राण प्रतिष्ठान होगा और लोगों के बीच में आए। नाउ दिस इज व्हाट यू कॉल डिसाइसिव लीडरशिप, व्हिच नो अ लीडर हैज टू हैव a guts to take certain decisions, and you say Ajit Pawar ji, and you found this leadership qualities in Narendra Modi and Amit Shah. Gandhi sahab,
नहीं, हेलो। हाँ बोलिए सर। हाँ, देखिए, ये जो राम मंदिर का भव्य निर्माण का कार्य और जो समारोह होने वाला है, इससे प्रकाश की ज्योति से जो नया एक सवेरा खड़ा होगा हिंदुस्तान में, वो हिंदुस्तान के इतिहास को करवट देगा। एक नए पन्नों का आलेख शुरू हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ये जिस तरह से आयोजन किया गया है, उसमें अजीत पवार ग्रुप का तो पूर्ण समर्थन है ही, क्योंकि राम मंदिर होना चाहिए। इसके लिए कभी भी किसी के दिल में या मन में कोई दो राह नहीं है कि भाई ये होगा कि नहीं होना, होना है और अभी हो रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा प्रसंग होने वाला है। इससे मैंने पहले कहा, वैसे इतिहास का पन्ना अभी करवट ले रहा है, पन्ना बदल रहा है, और जो नए पन्ने पे आलेख होंगे उसमें मोदी राम मंदिर के द्वारा एक स्वर्णिम अक्षरों से ये सारी बातें लिखी जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। गांधी साहब, जिस प्रकार से 143 या 145 एमपीज को सस्पेंड किया, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का कहना है कि एमपी सस्पेंड नहीं हो गया, लोकतंत्र सस्पेंड हो गया, डेमोक्रेसी हैज बीन किल्ड। और राहुल गांधी जी बार बार, आज से नहीं 2 साल से चिल्ला रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। opposition leaders are being targeted, judiciary is being intimidated, and right wing activism जिस प्रकार से हावी हो गया, तो ये धीरे धीरे ये चार्जेस एनफोर्स कर रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है ये लोकतंत्र सचमुच खतरे में था जब पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच हो गया? उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जी और इंडिया अलायंस का लगातार सब जगह मीटिंग हो रहा है। हाउ डू यू सी दैट सर, गांधी साहब? देखिए, ऐसा है, लोकतंत्र खतरे में नहीं है, कांग्रेस और सारे ऑपोजिशन वाले खतरे में हैं। और मोदी जी के सामने विरोध करने के लिए खड़गे जी ने भी अभी नई स्पेशल टोपी बना करके चढ़ा दी है अपने सर के ऊपर। आप देख रहे हैं टीवी पे जी। तो ये टोपी नहीं चलने वाली है, टोपी निकल जाएगी और खड़गे जी वापस अपने पिक्चर में आ जाएंगे जी। तो ये चलने वाली ये नहीं है, और इसमें लोकशाही को कोई धोखा नहीं है। और जितना भी कार्य हो रहा है हमारे पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में, वो बहुत ही कानूनन हो रहा है। कहीं भी आप देखो, कोई भी एक्सपर्ट लॉयर को आप पूछो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल के जो राइटर है, जो लॉयर्स हैं, उनको पूछिए कि आज तक बीजेपी ने इतनी दक्षता रखी है, मोदी जी और अमित शाह जी ने, कि उनके पार्लियामेंट अफेयर्स के जो मिनिस्टर्स हैं, उससे लेके सारे मिनिस्टर्स हर बात को टोटली लॉफुल जा रहे हैं। उनके सामने आज या भविष्य में भी कोई उंगली उठा नहीं सकता। अभी जो रेजोल्यूशन पास हो गए ना, वो रेजोल्यूशन भी पूरे लॉफुल है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। तो मुझे लगता है कि लोकशाही खतरे में नहीं है, कांग्रेस और खड़गे की टोपी खतरे में है। यानी जो टोपी है वो तो मुझे याद दिला रही है विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की जो कारकुल कैप थी, मुझे लग रहा है वही पहन रखी है उन्होंने, शायद वहीं से लेके आए होंगे, मुझे मालूम नहीं है। नहीं, ये तो माइनॉरिटी का तुष्टीकरण के लिए पहनी हुई टोपी है। नहीं शाबाश। लेकिन आई डोंट थिंक दीज विल वर्क, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज एज आई हैव बीन सेइंग ऑल अलोंग, यू नीड अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, यू नीड टू रीच आउट टू ऑल द पीपल। सिर्फ ये अलायंस बनाने में और एक लीडर को अनाउंस करने में कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोग्राम है, भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है और भारतीय जनता पार्टी का जो मॉडल है डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के लिए, वो सबके सामने। इंडिया अलायंस का डेवलपमेंट मॉडल क्या है वो अभी तक किसी को मालूम नहीं है सर। आपको मालूम है क्या कि उनका क्या विकल्प क्या है, क्या विकल्प वो दे रहे हैं भारत की जनता के सामने? अरे भारत की जनता के सामने उन्होंने विकल्प तो दे दिया कि हम अंग्रेजों के चमचे हैं, हम पाकिस्तान के समर्थक हैं, हम हिंदुस्तान के अगेंस्ट जाने वाले लोग हैं, आप हमारे साथ प्यार करो, हम नया पाकिस्तान बना के देंगे, नया बांग्लादेश बना के देंगे। ये तो इनका एजेंडा है। तो अपना एजेंडा तो इन्होंने एक्सपोज कर दिया है। सर, एक डीएमके के सांसद, उनका मैं नाम भूल रहा हूं, हाँ जी, वो ही इज ऑल्सो डिप्टी स्पीकर, हाँ जी, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है लोकसभा में कि मान लीजिए हम लोग अगर जीत जाते हैं, सो वी विल ट्राई टू रीइंपोज आर्टिकल 370, हम तो 370 को वापस लाने वाले हैं, ऐसा बोला। देखिए वो तो एक जमाने में सिब्बल ने भी यही कहा था कि जिस दिन राम मंदिर बनेगा उस दिन मैं राम मंदिर के पास जाकर के मैं अपना सेल्फ सुसाइड करूंगा जी, मैं आत्महत्या करूंगा अगर राम मंदिर हिंदुस्तान में बना। तो अभी कपिल सिब्बल को बोल दो कि डेट आ गई है, कब आप सेल्फ सुसाइड कर रहे हैं? 22 जनवरी को।
22 जनवरी को। जी। तो कपिल सिब्बल को पूछिए, उन्होंने ट्वीट किया हुआ है, मेरे पास उसका ट्वीट का कॉपी भी है जी है। तो उन्होंने किया है क्या? वो नहीं करेंगे। ये सिर्फ बहकावे वाले करने वाले लोग हैं, सिर्फ लोगों को बहकाना चाहते हैं और बेचारे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को और देशवासियों को फोगट में शहादत दे देते हैं और वो अपने जाकर लंदन और पेरिस में जाके मजे करते हैं। लेकिन ऐसे मुकेश ये गांधी साहब, देशद्रोही लोग हैं। ये आपकी बात बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है। जो आपने बात कही ना लंदन और पेरिस की जो बात कही, हाँ जी, एब्सोल्युटली करेक्ट। कि इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ श्रीनगर से और आसपास के इलाकों से, तो उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे आदरणीय सम्मानीय हमारे बड़े अच्छे मित्र डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वो अपने लंदन वाले घर में थे। हाँ जी, सही बात है, लंदन के घर में थे वो। और आदरणीय जगमोहन साहब ने वो सारी बसेस वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करी थी कश्मीरी पंडितों को वहां से निकलने के लिए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आर्टिकल 370 गया, ये पूरे भारत का सपना था। ये सिर्फ आरएसएस का श्यामा प्रसाद मुखर्जी का या भारतीय जनसंघ का सपना नहीं था। हम सब लोग आहत थे इससे। आपको याद होगा, आई एम श्योर यू मस्ट बी रिमेंबरिंग, 25 साल पहले 30 साल पहले जब हम लोग श्रीनगर में जाया करते थे तो दे यूज्ड टू से यू हैव कम फ्रॉम इंडिया, इंडिया से आए हैं आप क्या, ऐसा बोला करते थे। और आज अगर ये लोग बात कर रहे हैं कि वो आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे, तो मुकेश गांधी साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं 138 साल हो जाएंगे कांग्रेस को दिसंबर 28 को, तो 138 सालों में इन्होंने कुछ नहीं सीखा क्या कि भारत क्या है? मुकेश गांधी साहब, क्योंकि वो सीख ही नहीं सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, एक पर ग्रंथ लिखा, एक पुस्तक लिखी, पर डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बाद में नेहरू जी ने कभी भी भारत के आत्मा को, भारत की संस्कृति को, परंपरा को सीख करके लोगों के पास ले जाने का काम युवा पीढ़ी को दिया नहीं। और सेक्युलरिज्म का लेबल डाल के हमारे हिंदू धर्म और संस्कृति को दबाने का काम अगर किसने किया है तो नेहरू और नेहरू के परिवार ने किया है। जो आज उसका फल, जो पाप कर्म उनसे हुए हैं ना, वो अभी कांग्रेस भुगत रही है। इसलिए कांग्रेस अभी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है और कल कट ऑफ भी हो जाएगी, वो भी आप लिख के रखना। पर ये जो अब्दुल्ला ने कहा कि 370 की कलम, ये वो सब बातें करते हैं, वो कहते हैं कि ये कलम दूर हो जानी चाहिए, वापिस आनी चाहिए, और कहते हैं कि अभी यहाँ तो टूरिज्म भी नहीं है और सबसे ज्यादा टूरिज्म है, सबसे ज्यादा। नहीं, अभी मेरे हिसाब से अगर फिगर में आपको गिना हो तो आज व्हाट इज टूरिज्म इन कश्मीर, मोहब्बत करना सीखो, ऐसा ये आज अब्दुल्ला सिखा रहे हैं। और उसके सामने अगर आप देखेंगे तो आज अमित शाह जी ने अभी जो कहा कि पीओके वो भारत का अभिन्न अंग है, एक बात 2019 6 अगस्त 370 कलम को खत्म कर दिया गया, 2 झंडे चले गए, 2 संविधान चले गए, अमित शाह जी ने बताया, वो बहुत प्रॉपर है उनकी बात। और अभी ना हुर्रियत रही, ना जमीयत रही, ना पाकिस्तान की अभी चर्चा कर सकते हैं आप। सारी बातें अमित शाह जी ने उड़ा दी हैं। और आज देखेंगे तो 2022 में 1,80,00,000 मेरे हिसाब से टूरिस्ट कश्मीर गए हैं जी। 35 साल के बाद में थिएटर और नाइट शो चालू हुए हैं भैया जी। और तीसरी बात है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट लोगों को दिया जा रहा है आज, वो तीसरी बात है। और महबूबा मुफ्ती, अब्दुल्ला, कांग्रेस और कश्मीर, ये सब अभी पुराने ढंजे बजाने वाले कश्मीर के ऊपर अभी मौन व्रत धारण कर ले तो उनके लिए अच्छा है, नहीं तो जनता का आंदोलन हो जाएगा तो इनकी हालत खराब हो जाएगी। पत्थर मार के आज तक हमारे पंडितों को मारा, हमारे हिंदुस्तान के लोगों को मारा, कल ऐसा ना हो यही पत्थर रिवर्स उनके ऊपर जाना शुरू हो जाए, होगा, ये भी उनको देखना चाहिए जी। दुरुस्त बात। और दूसरी बात कि मोहर्रम, मुस्लिम धर्म की बात करते हैं तो मेरे मुस्लिम भाइयों को मैं कहना चाहता हूं कि आज तक मोहर्रम का सेलिब्रेशन नहीं होता था, अब मोहर्रम भी चालू हो गई वहां जी, हो गया। तो ये कितनी बड़ी बात है। तीसरी बात है पंचायत से लेकर महिला आयोग, चिल्ड्रन का आयोग, ये सारे आयोगों का वापिस पुनर्गठन हुआ और लोगों को उनका हक मिल रहा है। और 30,000 लोगों को तो अब तक नौकरी मिल गई कश्मीर के लोगों को। अभी ये सारे स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने हैं और फिर भी ये लोग कहते हैं कि अमित शाह ने, बीजेपी ने, आपके फिगर जरा गलत है।
हाँ बोलिए बोलिए। आपके जम्मू एंड कश्मीर के फिगर आपके गलत है, माफ हाँ जी हाँ बोलिए। हाँ आपने जी कहा आप बताइए। 1.8 करोड़, 1 करोड़ 80 लाख। नहीं नहीं सर नो, 1 करोड़। 1 करोड़ 80 लाख बोला आपने। हाँ जी हाँ जी। सर आज का फिगर मैं आपको बता रहा हूं, टुडे 22 दिसंबर, हाँ हाँ 2 करोड़ क्रॉस हो गया है। अरे वाह वाह बहुत 2 करोड़ लोग, 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट कश्मीर गए हैं। ये रिकॉर्ड है 1947 के बाद। इतने ज्यादा पर्यटक आज तक कभी जम्मू एंड कश्मीर में नहीं गए, और अभी तक साल खत्म नहीं हुआ है, 9 दिन और पड़े हैं साल को। नंबर 1। नंबर 2, जो फॉरेन टूरिस्ट हैं, जो कश्मीर आए हैं, फॉरेन टूरिस्ट विदेशी, उनकी संख्या में 350% का इजाफा हुआ है, 350% मोर। वेरी गुड। एंड दिस इज आफ्टर रिपील ऑफ आर्टिकल 370 सर, आर्टिकल 370 के बाद। और जैसा जी दुरुस्त बात है प्रदीप जी जो बता रहे हैं, जैसा अमित शाह जी ने बताया लोकसभा में, अरे 30 साल के बाद पहली बार मल्टीप्लेक्स खुले, वहां पे सिनेमा देखने को मिल रहा है रात के। सर नाइट शो चालू हो गए। अरे मुकेश गांधी साहब, रात के 1:30 बजे अगर आप लाल चौक के इलाके में जाएंगे श्रीनगर पे, तो आपको लगेगा आप जू में फिर रहे हैं, इतनी भीड़ होती है वहां पे आज की तारीख सही बात है। और काशी को भी ऐसे ही डेवलप किया अमित शाह जी ने, कल जो बात की है, बोले जी पिछले 2 साल में 13 करोड़ विजिटर्स हैड विजिट काशी, और 41% इंक्रीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर, 25,000 करोड़ का बिजनेस 2 साल में। अमित शाह के फिगर्स है गांधी साहब। So they are developing Ayodhya, Kashi. What do you think? I mean, just every spiritual center is being developed. अभी क्या है, पहले एक जमाने में खाली हिंदुस्तान में ताजमहल और कुतुब मीनार ही दिखाया जाता था। अब काशी का विश्वनाथ मंदिर भी दिखाएंगे, अभी महाकाल शंकर जी का मंदिर भी दिखाएंगे, सोमनाथ भी दिखाएंगे, और हमारी भारत की जो परंपरा है। और आज देखिए ना, आज कुरुक्षेत्र में हरियाणा में इतनी बड़े लेवल से आज गीता जयंती का सेलिब्रेशन हो रहा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। और ये देखने के लिए भी आज वहां कम से कम मेरे हिसाब से 20 या 22 हजार फॉरेन के लोग आए हुए हैं देखने के लिए कुरुक्षेत्र में। तो ये कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है। इसमें देखिए, मेरे मुस्लिम भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि हम हिंदू लोग कभी भी आपका द्वेष नहीं करते हैं, हम सबको साथ में लेकर चलने वाले लोग हैं। पर आप भी अभी मुस्लिम भाइयों को भी अभी द्वेष करना छोड़ देना चाहिए, और हिंदुस्तान की कल्चर की मेन स्ट्रीम में आ जाना चाहिए। और पाकिस्तान आपका मिट गया है, बांग्लादेश चला गया है, और आपको रहना है ये जमीन के ऊपर, तो ये जमीन से प्यार करो, मोहब्बत करो और ईमानदार रहो, बस। लेकिन तो आपने जो कहा आपने जो कहा अभी पहली बार ऐसा हुआ है सर, पहली बार 1973 के बाद, 72 या 73 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि मुहर्रम का जो जुलूस था, बिना किसी इंसिडेंट के, बिना किसी वायलेंस के, शांतिपूर्वक निकला श्रीनगर में। वही बात, नहीं तो कहीं नहीं, मतलब लेकिन मेरा सवाल कुछ और है। मैं इन प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा हूं कि कांग्रेस के लोगों को, and I'm only talking about the Congress because the only opposition to the BJP today is the Congress. There is nobody else. Let's be very clear. That is the only pan-India party. So can't they see what is going on? In fact, they should participate. Like Atal ji used to, Atal Bihari Vajpayee was the first person to praise Mrs. Gandhi after the victory in the 1971 war. 1971 के युद्ध के बाद अटल जी ने खुद एक जबरदस्त स्पीच दी प्रशंसा करते हुए इंदिरा जी की 1971 वॉर की के विजय के लिए। तो व्हाई कांट द कांग्रेस डू द सेम एंड लर्न समथिंग ऑन हाउ एन ऑपोजिशन शुड बिहेव? दे शुड पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। मुकेश गांधी साहब, देखिए ऐसा है, कांग्रेस जवाहर नेहरू की परंपरा इनके ब्लड में है। देखिए जवाहरलाल नेहरू ने भी कभी भी सरदार पटेल के सारे अच्छे मंतव्यों की कभी प्रशंसा नहीं की, राजगोपालाचारी का के कार्य की राजा जी की प्रशंसा नहीं की, कन्हैयालाल मुंशी की प्रशंसा नहीं की, किसी भी उस वक्त के राष्ट्रीय नेता थे उनकी प्रशंसा नहीं की। और वीर सावरकर के चरित्र का हनन करने का काम भी इन्होंने किया, और अंबेडकर जी को भी जिन्होंने मान्य नहीं किया उनको भी हराया। तो ये नेहरू परंपरा वाला जो ब्लड है ना, वो कभी भी मोदी जी के अच्छे कार्य की सराहना नहीं कर सकता। और मुझे तो डाउट है राजीव जी
कि मुझे नहीं लगता है कि इनको इनविटेशन राम मंदिर का दिया गया है सोनिया जी को, राहुल जी को, तो वो राम मंदिर के प्रसंग पे जाके उपस्थित होंगे या नहीं, ये मुझे डाउट है। सर इनविटेशन ना भी दिया, अपने आप जा सकते हैं। दे तो दिया मल्लिकार्जुन खड़गे जी को और सोनिया गांधी जी को। जी दिया है दिया है। सोनिया जी को इनवाइट किया गया। हाँ जी, सोनिया जी को इनवाइट किया गया पर शायद वो नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे। आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? जाएंगे सर आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे 22 जनवरी को? अरे रोम रोम में रमा हुआ है सबके अंदर राम, तो राम तो यहाँ भी है वहां भी है। सर हम लोग रहेंगे मिलके बम्बई, हम यहाँ आप रहेंगे, हम सेलिब्रेट करेंगे यहाँ। We'll be there, but we'll be among the pilgrims. We will not be among the VVIPs. We'll be among the pilgrims right there and shooting the entire scene. 3 करोड़ से ज्यादा लोग आने वाले हैं सर, 3 करोड़ से ज्यादा लोग आने वाले हैं। 100 एयरक्राफ्ट, वो जहाज अपने अयोध्या एयरपोर्ट में 100 जहाज रहेंगे उसी वक्त पर एट वन टाइम। इट्स गोइंग टू बी हरकुलियन टास्क फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन को कंट्रोल करना। लेकिन गांधी जी, आई जस्ट कम बैक टू पार्लियामेंट्री ब्रीच नाउ। जैसे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उनका कहना है कि हमने सिर्फ मोदी साहब को 4 प्रश्न पूछे थे। एक, मोदी साहब आप पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ब्रीच के बारे में जवाब दीजिए। अमित शाह का इनिशियली रिजिग्नेशन मांगा था, बट वो लेकिन लास्ट में अमित शाह आप रिप्लाई कीजिए और नेशनल सिक्योरिटी और पार्लियामेंट सिक्योरिटी पे डिबेट हो पार्लियामेंट के अंदर। और चौथा, जो बीजेपी एमपी था उसका इस्तीफा, सस्पेंड करो उसको, बिकॉज उसके पास के माध्यम से ये 4, 5, 6 लोग अंदर आए थे। तो हाउ डू यू सी गांधी साहब एज एन इंडिविजुअल एंड डेमोक्रेसी में जो बिलीव करें, कुड मोदी साहब एंड अमित शाह कुड हैव एक्सेप्टेड दैट एंड हैड अ डिस्कशन इन द पार्लियामेंट? हो सकता था गांधी साहब? हाँ जी, देखिए, हाँ आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही। देखिए ऐसा है कि ये जो पार्लियामेंट में ये जो घटना बन गई, ये घटना के पीछे कौन किसकी साजिश है और क्या है, वो समय आने पर अमित शाह जी एक्सपोज करेंगे। पर एक बात है कि इसकी ये घटना के बाद में अमित शाह जी ने पूरा कंप्लीटली इनके ऊपर एक्शन लेना जब शुरू कर दिया है, और पार्लियामेंट में डिस्कशन करने के लिए भी उन्होंने ना नहीं कहा है, पर एक छोटी सी बात को लेकर के, प्ले कार्ड लेकर के आप अंदर चले जाते हैं, पूरा कैओस कर रहे हैं। और नए जो बिल्स आने वाले हैं, वो बिल्स का ऑपोजिशन वो नहीं कर पाएंगे। इनके एडवांस में इन्होंने ये नीति ली है, कांग्रेस और ऑपोजिशन ने। आप एक मार्क करना, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि उनको निलंबित होना था और उन्होंने वो निलंबन करवाया है। इसमें बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आने वाले जो बिल इश्यू हुए और जो बिल पास हो गए पार्लियामेंट में, वो उनकी प्रेजेंस में उनको नहीं रहना था, उनको दिखाने का था कि हमको इतिहास के साथ, हिंदुस्तान के इतिहास के साथ कुछ लेना देना नहीं है। और जो नए कानून जो अलग अलग आए, कितना जबरदस्त कानून पास हो गए हैं, आप देखिए। एक के बाद एक कानून, एक के बाद एक जो कानून पास हुए हैं। पहला तो जो 3 बिल आया, वो मैकोले ने जो 1834 में जो बनाई हुई जो घटना थी, जो 1862 से कानून हमारे सामने लगाए गए, और 7.5 करोड़ मुकदमा, 9 करोड़ परिवार, आप गिनो तो 45 करोड़ लोग हिंदुस्तान के इससे अफेक्टेड थे जी। उसके सामने जो नया बिल आया है कि 3 साल में कोर्ट में फैसला होगा और पुलिस की इंक्वायरी जी वो 90 डेज में क्लियर होगी। ये कोई छोटा अमेंडमेंट नहीं है, छोटी बात नहीं है ये जो अमित शाह जी ने और बीजेपी ने लाई है। दूसरी बात, जो मॉब लिंचिंग, कि मॉब लिंचिंग में हमको हिंदुओं को उन्होंने ठहरवा दिया था कि मॉब लिंचिंग हिंदू लोग करते हैं, पर आपको मालूम होगा कि पिछले कितने सालों में हमारी हिंदू दलित महिलाओं के ऊपर कितने अत्याचार होते थे, और वो अत्याचार के कारण 2004 से 2000 साल में हिंदुओं की मॉब लिंचिंग में हमारी 1760 हिंदू महिलाएं मर गई हैं, शहीद हो गई है जी। माने उतना उनका इन्होंने, उनको सामने वालों ने, मुस्लिम कम्युनिटी ने उनका मॉब लिंचिंग किया है। उसके ऊपर सारे कानून, सारी चीजें दबाई गई थी। वो क्यों दबाई गई? अब मॉब लिंचिंग के बारे में देखना, अभी हिंदुओं ने मॉब लिंचिंग की, ये कोई बताएंगे नहीं। हमारी गायों को ट्रक ट्रक में भर के अलग अलग बॉर्डर से उनको कत्ल खाने में लेके जाते हैं, बेचते हैं, और बीफ ईटर को एक्सपोर्ट करवा देते हैं 2 नंबर से। ये सारे काम अब रुक जाएंगे, आप देखना। और ये मॉब लिंचिंग का इश्यू जो इन्होंने किया है वो बहुत जबरदस्त है। और दूसरी बात है, तीसरा कानून कि जेडीयू के देश के टुकड़े टुकड़े होंगे,
ये इनके सामने भी कानून आ गया ये नए बिल के जेएनयू अंदर। सर, जेएनयू, जेडीयू नहीं, जेएनयू। जेएनयू, सॉरी, जेएनयू के नारे में देश के खिलाफ, धर्म के, जाति के खिलाफ अभी जो कोई भी नाराबाजी करेंगे उनको 5 साल की सजा मिलेगी। अभी हमारे ओवैसी साहब भी जो बकवास करते हैं हमेशा टीवी पे आपे, और उनके भाई कहते हैं कि हमको सत्ता दे दो, हम 5 साल में तो ये सारे लोगों को मिटा देंगे, ये सबकी हवा अभी निकल जाएगी। लेकिन ओवैसी साहब तो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिटी की बात करते हैं, लॉ की बात करते हैं, और ये बोलते हैं कि हमने तो सिलेक्ट कर लिया, हिंदुस्तान हमारा है और इसी मिट्टी में हमें रहना है। हमेशा यही बोलते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। हाँ, पर मिट्टी में रहना है, पर कांटे तो नहीं उगाना है, गुलाब के फूल उगाओ ना, कांटे क्यों उगा रहे हो? बोलते दोनों उगते हैं ना साथ में, गुलाब के साथ कांटे भी उगते हैं। नहीं, गुलाब के साथ कांटे, पर ये तो सिर्फ काली कांटों का जो झाड़ होता है ना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मैं भूल गया। लेकिन मुकेश सेक्टर, लेकिन वो उगाने का। लेकिन मुकेश गांधी साहब, कहा तो ये जाता है कि असल में ओवैसी साहब रिपोर्ट्स टू दैट मैन ऑन द स्क्रीन, मिस्टर ऑनरेबल मिस्टर अमित शाह। असल में हाँ, ओवैसी साहब तो अमित शाह जी के आदमी हैं, और वहीं पर कैंडिडेट खड़ा करते हैं जहां पे कांग्रेस को हराना होता है। मुकेश गांधी साहब, नहीं, ये गलत बात है। ऐसा है कि हमेशा बीजेपी जब जीतती है ना, और तो सामने जो कमजोर पार्टी है उसको बी टीम लोग बना देते हैं जी। अभी हम गुजरात में हम एनसीपी को लड़ा रहे थे, तो कांग्रेस क्या बोलती थी कि हम तो एनसीपी बीजेपी की बी टीम है जी। वैसे ओबीसी बी टीम बनाने का ट्राई करते हैं, और वो एक बाजू से अपने आप को सेफ रखने के लिए लोगों के अंदर एक मैसेज देते हैं अपने कार्यकर्ताओं में जी। कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं तो अमित शाह के साथ जुड़ा हुआ हूं, मैं उनको मदद कर रहा हूं। वास्तव में ये बात गलत है। अमित शाह जी ऐसी दोधारी नीति नहीं करते हैं। कांग्रेस ने यहाँ शिवसेना वेरी इंप्रेसिव। आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, इफ ही वाज रियली डूइंग दैट आई विल बी वेरी इंप्रेस्ड। अगर उन्होंने असल में ओवैसी साहब को प्रॉप करके रखा हुआ है, देन आई विल बी इवन मोर इंप्रेस्ड विद मिस्टर अमित शाह एंड व्हाट ही इज डूइंग। बट इफ यू से ही इज नॉट, देन इट्स ओके। पर चलते चलते मुकेश गांधी साहब, ये बात है। हाँ जी। छगन भुजबल साहब ने आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग, दिलचस्प स्टेटमेंट दी है, जबरदस्त। उन्होंने कहा है कि वो मनोज झरंगे पाटिल जो है ना, वहां पे 6-7 बंगले और भी बना दो, 2-3 मंत्रियों के बंगले, चीफ सेक्रेटरी का बंगला, लॉ सेक्रेटरी का बंगला, लॉ मिनिस्टर का बंगला, वही बना दो, क्योंकि हमेशा तो वही उन्हीं के आसपास रहते हैं। और आने वाले हर चीज में कानून के बारे में उनसे एडवाइस ले ले। ये विषय भी क्या है? मराठा रिजर्वेशन प्लस अदर रिजर्वेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर। ये क्या है सर? कोई भुजबल साहब से बात तो करे। अजीत दादा ने बात तो करी थी उनसे, लेकिन अभी भी उनका गुस्सा मुझे लग रहा ठंडा नहीं हुआ, क्योंकि झरंगे पाटिल साहब भी कुछ ना कुछ नोकझोंक करते रहते हैं उनके साथ। जी मुकेश गांधी साहब, कुछ कहना चाहेंगे इस पे आप? नहीं, क्या है, ये जो इन्होंने जो सैटायरिक अपनी लैंग्वेज में उनकी स्टाइल में जो बात की है वो सही की है कि जरांगे को ऐसे, उसको एक जो मिशन है उसका मराठा रिजर्वेशन का काम है, वो वहां तक उनको सीमित रहना चाहिए। वो भूल गया। अगर वो एडवाइजर बन जाएगा तो उसका पूरा आंदोलन जो है ना वो रिवर्स हो जाएगा। जिस तरह से गुजरात में पाटीदार आंदोलन, हरियाणा में जाट आंदोलन रिवर्स हो गया ना, वैसा ये आंदोलन रिवर्स हो जाएगा। लेकिन मुकेश गांधी साहब, पर्सनल क्वेश्चन टू यू, एक व्यक्तिगत सवाल आपसे, नॉट एज एन एनसीपी लीडर, नॉट एज एन एनसीपी लीडर, व्यक्तिगत सवाल है। ये झरंगे पाटिल साहब की ये जो रैलीज हो रही हैं टाइम टू टाइम, बिल्कुल क्लॉकवर्क की तरह, ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ, ये कौन करा रहा है? झरंगे पाटिल साहब इतने केपेबल हैं क्या अपने आप ये सब कर लें? इज दैट पॉसिबल? मुकेश गांधी साहब, इसके पीछे है कौन? आपका प्रश्न बहुत सही है, और जरांगे पाटिल यही मार खा रहा है, क्योंकि अगर जरांगे पाटिल अकेला काम करता था और आंदोलन चला के अपनी रैली करते चलते हुए पदयात्रा करता था तो वो अप्रिशिएट होता था। पर जो ये जंगी सभाओं का आयोजन, जो खर्चे जो होते हैं, एक सभा के पीछे 5-5, 10-10 करोड़ का खर्चा होता है पॉलिटिकल रैली में जी, और वो करने वाला उनके पीछे जबरदस्त, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की लॉबी है और ये उनका पूरा फंडिंग करती है, और उनको शिंदे की गवर्नमेंट को गिराने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए और बीजेपी को बदनाम करने के लिए ये इसको एक इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं। वो बहुत गलत बात है। ये मुझे कांग्रेस की लॉबी है कि शरद पवार साहब की लॉबी?
कांग्रेस में शरद पवार जी आ गए हैं। उद्धव ठाकरे वो सब एक ही सिक्के की दो बाजू है। हाँ, अभी उद्धव तो कांग्रेस ही हो गया ना, अभी उनकी शिवसेना नहीं, उद्धव साहब पैसे नहीं खर्चते सर, उद्धव साहब पैसे नहीं खर्चते, आपको हाँ? मालूम है? वहाँ नहीं, सर, वहाँ पर आउटगोइंग बंद है सर, सिर्फ इनकमिंग है, ओनली इनकमिंग ओनली। अरे नहीं, हाँ वो उनका पर्सनल इश्यू है। जब अपने निगहबान पर कोई हाथ डालता है ना, तो उसको बचाने के लिए आदमी अपना घर की सारी मिलकत भी लुटा देता है। वैसी उद्धव की भी हालत है। जो पहले एक्टिव नहीं थे, इतने अभी एक्टिव उद्धव जी हो गए हैं, और वो क्या करते हैं वो उनको पता। पर जो हो रहा है, मेरे को उद्धव जी के लिए बहुत प्यार है, मेरे पुराने दोस्त हैं वो। मैं भी शिवसेना में 10 साल था जी। पर जिस राह पे वो अभी चल रहे हैं, वो राह में सिर्फ उनके पीछे एक ही पिक्चर बन सकती है, गुमराह उद्धव ठाकरे। राइट, थैंक यू सो मच सर, मुकेश गांधी साहब, रियली हाँ जी। प्लेजर टॉकिंग टू यू। आई होप यू विल विजिट आवर ऑफिस आल्सो वन ऑफ दीस डेज। आप जरूर हमारे ऑफिस भी आएंगे, स्टूडियो में भी आएंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ यू विल शेयर अ कप ऑफ कॉफी और अ कप ऑफ चाय विद अस। दैट विल बी वंडरफुल। 100% और आज गीता जयंती के दिन पे हम श्री योगेश्वर कृष्ण को सत सत प्रणाम करेंगे और कहेंगे कि गीता के जो पॉजिटिव विचार है वो हमारे देश में नई युवा पीढ़ी में जाएं। और इनके लिए भी आप कोई प्रयत्न करो कि युवा पीढ़ी को हमारा धर्म क्या है जी, हमारी जीवन, हमारी संस्कृति परंपरा क्या है, इसके लिए भी आपकी चैनल से कोई प्रयत्न नए होने चाहिए। मैं आपको आऊंगा, आपके साथ कॉफी पीऊंगा और साथ में मैं लड्डू भी लेके आऊंगा। क्या बात है थैंक सर। यू। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। हर हर महादेव। जय श्री राम। हर थैंक यू हर महादेव। जय श्री राम। Thank you, sir. Right, at the moment with us, that was nice from Mr. Mukesh Gandhi. Yes, yes. At the moment with us, Mr. B.N. Kumar, now an environment activist, former journalist, but there's nothing like a former journalist. Everybody's a journalist. Once a journalist, always a journalist. Always one. Yes, and one of the best known names in PR in the entire country, and at the moment a man in a hurry, Mr. B.N. Kumar. B.N. Kumar sahab, namaskar. नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। बीएन कुमार साहब, आपको बता दूं कि हमारे मित्र प्रदीप नंबियार जी का आज जन्मदिन है। प्रदीप जी का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे प्रदीप। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वेरी गुड। So BN Kumar sir, what My happened? birthday is next Sunday. Your birthday is next Sunday. Wow. So we'll have a special show for you only on your Yeah, birthday. okay. BN Kumar sir, so what happened? जैसे इसका पहले वाला speaker- what happened with regard to the fact that the so-called order which has come, which has completely ignored the mangrove intertidal zone, the fact that this area was supposed to be a mangrove zone and it was supposed to be returned to the forest department and so on and so forth. What is going on here? Could you tell us that, B.N. Kumar sir? It's it's very unfortunate that the Maharashtra Coastal Management Authority MCZMA इससे पहले का मीटिंग में उन्होंने एक ऑर्डर दिया था कि there should be no construction in the CRZ area. The construction should be limited to only non-CRZ, which means out of the 40,000 square meters that has been allotted for the Tirupati temple, only on 11,000 square meter it should be allowed. So in between, what happened was that they have taken shelter under, they means the Silco, TTD and even MCZMA, they have taken shelter under the center's newly approved coastal zone management plan. उसमें उन्होंने थोड़ा बहुत कंसेशंस दिया। उसमें कहा कि अप टू 50 मीटर फ्रॉम दी बफर जोन, बियॉन्ड 50 मीटर यू कैन स्टार्ट कंस्ट्रक्शन, यू जस्ट लीव 50 मीटर इंस्टेड ऑफ 100 मीटर दे बिटवीन 50 मीटर। दिस लॉ हैज बीन देयर अर्लियर बट दे फॉर्मलाइज्ड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान। बट व्हाट द इंटरप्रिटेशन दैट SILCO and TTD, not TDP, TTD and MCZMA have come together now to show the whole plan in such a way that the CRZ2 has been, amalgamated with the non-CRZ, so that area increases to about 29,000 square meters. So in the new clearance that MCZMA has given, the CRZ1 has been reduced to some 2,000 odd square meters. CRZ2 is some 7,000. Baki 29,000-30,000 is CRZ, outside CRZ. And one interesting aspect here is that all this data they have been saying partly in CRZ1, partly in CRZ2, partly out of CRZ. So partly they have been mentioning. So exact area कितना बनता है क्या नहीं है उसके ऊपर कोई clarity नहीं है. Number one. Number two, how
they drew this CRZ to what you call line from the original CRZ1. That also we do not know. It's very ambiguous. And third, most important part, of course, first one is it was part of the casting yard that you said earlier. The third most important part is that through the plot, the line cuts across, the front hazard line cuts through the plot. So that aspect also they have ignored. It's very unfortunate. And the other thing that you mentioned was that the district collector of Panvel Taluka has said that there are 35 wetlands in this taluka, that is Panvel Taluka, but Yeah. the temple area, that by the way, that is the TTD that Mr. B.N. Kumar is mentioning, that is the Tirumala Tirupati Devasthanam, that is not one of them. How? Yeah. Is there a problem? Yeah, I mean, Is somebody disturbing the you? problem is, Somebody disturbing you on that side? No. Who's it? no, this is a cafe, somebody having a chat. I told them it's okay, they're cooperating. No issues. So, yeah, it's very. How did that come about? How did this thing, which is part of the mangrove intertidal zone, and everybody knows it, Yeah. it has been registered as such. How is Yeah. it that it does not find place in the 35 wetlands And, identified by the district collector? Sir. No, in fact, there is a big lacuna, as we were discussing earlier. These wetlands have been identified by the satellite map with ISRO. Yes. But ISRO map is very unclear. It only shows some kind of blue lines here and there. You and I can't read what is the wetland, what is the wetland. But they have come to conclusion on a figure saying 2.25 lakh wetlands have been identified. See, these are the wetlands which are the water bodies outside the sea. But we were talking about a Samundarka area. This is the intertidal wetland. This is the water comes and water goes. So this need not be declared as a wetland. If collector and tahsildar say this is not a wetland, tomorrow they will say Arabian Sea is also not a wetland. So the MCZMA has I mean, passed this a very ambiguous order. Is that what you're saying? Yeah, very ambiguous, very disturbing, and it's illogical. Gee. Because we have been screaming from the rooftops, and then we already moved NGT. NGT has given them the notice to come and reply to whether there is any construction going on or not, which means they are aware of the issues before the NGT. Now, That, B.N. Kumarji, ought to have considered. B.N. We also Kumarji, informed them. the basic question that we are coming to, that this was a casting yard Yeah. which had to be returned by SIDCO. Now, Correct. casting yard which has to be returned by SIDCO to either the forest department or whichever department. Now that part of the casting yard has been given to Balaji temple. Now the point is, Not all of it. Only part of it. Gee. yeah, part of it has been given. So this actually is not authorized to be given at all. It is ab initio, the entire thing is wrong. It is totally wrong. I mean, just because you had a Yeah. possession for some Yes. years, how can you give it, authorize somebody else to construct a permanent construction on that? Now the whole thing, the very basis on which the entire thing is fact is based is totally wrong. The possession of the property, the authority giving that particular land to Balaji temple, and Balaji temple buying it, everything seems to be wrong ab initio, right at the instance, at the initial stages itself. Now how are we coming to some conclusion whether wetland or not wetland? You have to return the land, why don't you return the land? True. In fact, there is another development. SIDCO itself has admitted that this was a casting yard area from which they have taken for the temple, and it was a given to MMRDA on the lease. This fact now has been reconfirmed in the High Court appointed Mangrove Committee meeting that was held recently. I just got the minutes. In those minutes, based on our complaint, the High Court appointed Mangrove Committee, Mangrove Protection and Conservation Committee, has asked SIDCO to respond, and they have also asked the district collector, the tahsildar, to investigate, look into the entire area, to say what kind of mangrove destruction has taken place. So SIDCO has replied saying, yes, it was a casting land area from which we gave partly, as RKB mentioned, about 40,000 square meters, 40 acres.
But how can they do 10 acres that? soil. As Pradeep ji asked you, how can they do that? No, They are no, supposed to return it next year but- on 12 January को उन but- लोगों को 24 they are supposed to return it to I think the forest department who are the original holders. No, but here also they have hidden the key fact that it was a flourishing biodiversity area before casting guard came in. Casting guard was only temporary. It ought to have been restored. That key fact they have hidden even from the High Court appointed Mangrove Committee. But B.N. Kumar Sahab, what Pradeep ji is asking is the most fundamental question in law. The whole thing, ab initio, proceeds from a completely and totally illegal act. Land which does Yes, not it is. belong to one entity, that is Sitco, Correct. has been given for construction of a temple to another entity. So how is that possible? I still don't understand this. Rightfully, all the directors That's of what- Sitco who have signed on this ought to be in jail. How can you parcel of land, sublease it, lease it, rent it out or sell it which does not belong to you? B.N. Kumar sir. Correct. You can't even touch it. See, this is in fact, Sitco here has been an habitual offender, I must say, because of late, for the past say 5-6 years, they have been leasing out all kinds of areas for infrastructure in the name of infrastructure and real estate development. I am right now sitting in Ghansoli. In Ghansoli area, in Navi Mumbai, there have been plots which cut into CRZ1 and CRZ2. वो पूरा plot area दिखाते हैं. Suppose it is a 10,000 square meter area. Of which will be 2,000 could be in CRZ2, 1,000 maybe in CRZ1. But they don't take money for 7,000. They take money for entire 10,000 square meter, which means they are selling something they do not own, which is patently wrong. And even in the case of, I'll tell you a very interesting incident, RKB and Pradeep, to our viewers also. Sitco has given some plot to Navi Mumbai Municipal Corporation for its super specialty hospital and college hostel, etc. Just behind the NMC headquarters. That area also partly cuts into CRZ2, partly into CRZ1. They have allotted, Sitco has allotted Bindas. So now, of course, they will not be charging that kind of money that they charge to builders to NMMC. But to NMMC, they said you pay GST. So NMMC commissioner at that time, Abhijit Bangar, wrote to them saying, why do we have to pay GST on a land which we are not going to use? And that's where I asked Mr. Bangar also. Not only you are not going to use, it's not your land, it's not my land, it's not Sitco's land. It's a public property, it has to be left, it's the nature's property. Yes. Something you don't own, you lease out, you take GST on it. I mean, ridiculous. B.N. Kumar Sahab, this- just one Yes, second, yes, yes. one second, one question, very, very fundamental question. B.N. Kumar Sahab, Pradeep ji, both of you are journalists, alright? B.N. Yeah. Kumar Sahab may like to deny it, but he's actually a journalist. Inside he's a journalist, let's be very clear. He might call himself an environment activist, PR expert, etc., but inside he's a journalist and will always be. Yes. Sir, ये काम जो अभी सिडको कर रहा है, मैं चाहूंगा आप हिंदी में जवाब दें या मराठी में जवाब दें. अरे ये काम तो दाऊद इब्राहिम के लोग करते थे. अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, बिल्डिंग किसी और की है, कौन है, क्या है, अंदर घुस गए और उसको आगे बेच दिया किसी को. सिडको क्या दाऊद इब्राहिम की कंपनी है? पूछ रहा हूं सर आपसे. B.N. कुमार साहब. Because actually, They are behaving like I would like to gangsters. take this kind. It's kind of it's a land grab. They are behaving like landlords. They are behaving like land sharks in fact. Yes. ये सर ये तो कुछ भी नहीं है. This is only ये तो एक it's a tip of an iceberg. What we are talking about will be in this NMC hospital in Uran area. The entire NMC the entire JPT has been given a lands areas of mangroves and wetlands for JNPA SEZ again there. And JNPA has Nandakumar Pawar also must have told you has submitted a report EA report to Central Environment Ministry to obtain EC. In the column the declaration में उन्होंने कहा है कि mangroves to be cut nil. We will not be touching any mangroves. Wetland to be any reclamation to happen nil. And what is actually happening is totally to the contrary. I have pictures of the area where they have been dumping tons of sand and muddy dumpers on mangroves and on wetlands, and they are reclaiming. Permanent reclamation they have done, and they are leasing it out now. They recently sold some 15 20 plots.
15 or 20 plots of land, Pradeep ji, which does not belong to them. Pradeep ji. I want to just come back to this. Yeah. The mystery is not yet over. We want to really understand the mystery. Now, this 19 hectares of land, MMRDA was supposed to give it back to SIDCO on 12/1/2024. Correct? Exactly. And SIDCO was supposed to give it back to the forest department or something? Because this is a fishing... ought to have this is mangroves fishing zone wetland area, which on which MMRDA built the casting yard, and the casting yard had to be dismantled, created back, in a proper way as they are taking it back, as and when they are taking it, and hand over this plot to SIDCO, and SIDCO was probably to give it back to the forest department. Is it so, BN Kumar ji? Correct. Now, Correct. instead of giving this plot back to 19 acres of land, 19 hectares of land back to forest department, SIDCO, out of 19 hectares, 10 acres, they give it to this Tirumala temple. And Tirumala temple is constructing 2.5, 1/4 of the temple use they are doing it. Now, the entire thing here is an issue. This land is actually a forest department, that means. Forest department, and they were supposed to take possession of that. And now SIDCO sold it. So is this point being argued there? In fact, this is the point that we have taken up with NGT also. What we told them that it is not a land, it was a sea. Mangroves is no land, they don't sea. They covered all the mangrove. They should have removed all the landfill and restored the water flow. Mangrove would grow on their own. Exactly. They should have restored totally integrated water flow. Mangrove would have grown, and remove the landfill, restored the mud flats, so that it would have been useful for the birds to come, for the crabs and fish to breed. Even the mud flat is also totally undisturbable. It's a CSR1 area. That, in fact, this board you can see now, it is all part of the biodiversity, ecology. So now what happens? Now, are you challenging the very fact that SIDCO has illegally, which is not their land at all, has been given to the temple trust, and they are supposed to return this 19 hectares back to forest department? Correct. And get this back. The entire casting yard should be back to mangroves, fishing zone, wetlands. Yes. To the same position. Correct. So instead of that, their concretization, not even returning it. Yes. Correct. And what is also disturbing is that this legal process is in process now. NGT के सामने से पूरा केस पड़ा हुआ है, इन लोग अपना काम करते जा, which is again shocking. They should wait for another couple of months, wait for NGT decision. Why is it such a hurry? But that is possibly because NGT has not given a stay. They haven't stayed the entire process. They have not given stay, yes. Possibly because of that. But don't you think perhaps the High Court should be asked to intervene, or the Supreme Court be asked to intervene and find out about all the illegal activities of SIDCO that you have outlined over there? Because SIDCO and JNPT, they seem to be the villains of the piece who have destroyed the ecology of the region. Mr. BN Kumar. There is before going to Supreme Court or High Court, when you go to High Court or Supreme Court, first thing they will ask you is, have you exhausted all your available channels of justice? So High Court would ask you to go to NGT, so which is why we go to NGT. Now, if NGT continues to delay and they do not give you a decision, say for the next couple of years, and by that time the Balaji temple will come up. No, we have another avenue, which is the High Court appointed Mangrove Committee, which is also equally powerful. They have all the powers on the earth to handle to check the destruction of mangroves. So this committee is all powerful. So this committee meets once a week, once a month. So in fact, this latest thing that we are talking about, SIDCO inquiry, district collector inquiry, has come up only after our complaint to this Mangrove Committee. So people like Stalin, Devi Goenka, they are all members there. We'll keep raising our noise there. In fact, I have written today to all the members of this committee. There are about 25 members. To all of them, I have written separately, saying this is the situation. The key fact that it was an originally biodiversity zone. Casting yard was only temporary. There is documentary evidence available to that effect. There are Google maps available to that effect. I have studied in the pictures. I have shown them the CNMP map which shows the flood hazard zone cutting through the the plot. All that things are pointed to them.
So hopefully the next hearing, 29th, I think the hearing is due. I hope that happens. Now, are we challenging the ownership of this land? important. Ownership of this land of Tirumala temple? Are we challenging it? How they are in possession? Is it ownership, whatever lease which they have been given? Are we challenging that? Yes, we are challenging the very basis of the allotment. The allotment itself is patently wrong. Whether Sirco has charged the money or not, giving them at 1 rupee nominal this thing, the total allotment process is patently wrong. That's what we are Rightfully challenging. speaking, B.N. Kumar Sahab, there should be an FIR registered against Sitco for land fraud. Let's be very clear. Good point. Here the only thing is under the Environment Act, because this is the destruction of mangroves, etc., and destruction of wetlands is involved. The complaining authority is the Environment Department. But it's the B.N. Environment B.N. Department Kumar Act. Sahab, B.N. Kumar We're Sahab, off- एक मिनट साहब. Privately we can't do that. Sir, last question, one final question. ये तो बात की बात है. जी जी. This is part 2. What we are asking, Pradeep ji and I, what we are asking is, when the initial act itself is patently so illegal, they should be arrested under the Gangster Act. What are they doing? अरे अरे जमीन तुम्हारी नहीं है भाई और उसको तुम बेच रहे हो लोगों को कि जैसे तुम्हारी हो. Bilkul, you have no bloody right there. You have no right. So why don't we challenge that? No, it has come to that. So whatever action has to be taken, so that's what we are asking the Mangrove Committee now. Please take some soonest possible action. They have all the powers. In fact, Mangrove Committee can also write to High Court directly, saying this is what is happening, these are the violations taking place. They can ask High Court to intervene, and I don't have to challenge, and I Right. don't have to go and find a petition there. I hope you The committee succeed. has all the powers. BNK, I hope you succeed. We Hopefully, are all with you. We are Always will struggling be now. with Let's you. see. Let's all together fight for it. Right, absolutely. This concerns all of us. Thank you very much, Mr. B.N. Kumar. So nice of you for appearing on the show. Thank you very much. Thanks a lot. Bye bye. Namaskar. Namaskar, Jai Siya Ram. Right, and at the moment with us, all the way from Delhi, our very dear old friend from the Congress Party, Mr. Rakesh Shetty. Rakesh Shetty Sahab, Namaskar. नमस्कार राजीव जी, प्रदीप जी नमस्कार. Namaskar. Namaskar, Rakesh Shetty Sahab. Today is Pradeep ji's birthday. You can wish him a happy birthday if you feel like. Thank you. अरे morning I have already wished him on his Facebook. Yes, If yes. you have noticed. Yes. But on air I will just wish him Yes. wishing you many happy returns of the day. Fantastic. Thank you. And you should be with your family right now. Yeah, But you Yeah, are, he's going. Just after the show, he's going. So, Rakesh Shetty Sahab, you are in Delhi. What is being planned, sir, with regard to the Delhi, 143 suspensions we and were so on? in Delhi at Jantar Mantar today to protest because as you are aware, Yes. around 141 member of parliaments have been suspended. And so Save the Democracy was the slogan today. And Sharad Pawar and all the allies of India coalition was present there, and we have protested, and that was the thing. And it is very shameful to see how Narendra Modi government is trying to suppress the voice of the opposition, and MPs should be inside the Lok Sabha and Rajya Sabha questioning the government, but they have bluntly suspended all of them. And now they have made a very big issue about Rajya Sabha chairman was being mocked by one member of parliament from TMC. Ji. And Rahul ji as a bystander, was standing and taking a video out of it. So I think it is a shame to see that you are not answering the real questions, and the entire media, whom we call as Modi media, are more interested in questioning Rahul Gandhi. Instead, they should question the government ki why did you suspend this so many member of parliaments, and their voice should have been heard inside. Yes. But no, they are more interested in the so-called hurt which has been caused to Mr. Jagdeep, Honorable Vice President, and even the see- Jat community. Jat Putra, Honorable- Kisan Putra, OBC Putra, Uprashtrapati. That is the things that he talked about. He is a Jat See, Putra, he today- is a Kisan Putra, he is today- a OBC Putra, Uprashtrapati. Correct. Today, Mallikarjun Kharge ji have answered him. He said, every time I give you a slip and that I want to raise a question,
and you don't even look at that slip and you straight away deny, should I come out and say ki because I am a Dalit, you are not allowing me? I have never done that. And he's saying I am a farmer. So the question is that when thousands and lakhs of farmers were protesting for that against that farm law, where were you? You never questioned your party colleagues. You never questioned Bharatiya Janata Party that even I am a farmer, you should scrub those land law against the farmers. He never raised it. Yes. When Jat and Punjabis and people from Sikh community were labeled as Khalistani, Atangwadi and all, you never came out and raised your voice. And quite Today a few we can who died there were Jats. Who died, they were judged, and he never uttered a word. But today, since we are questioning your actions, immediately you have become farmer, immediately you have labeled yourself as judge. And So what thirdly, about the Rakesh real Sahib, judge I who would were- like you to comment on yesterday a wrestler by the name of Sakshi Malik, the one person who got us our first bronze medal in women's wrestling in the Rio Olympics. She said that she had never been so insulted in her life. That even after the sexual attack that was on her by the gentleman who was the president of the WFI, whatever his name was. What was his name? Vishbhushan Singh. Brij Bhushan Singer or whatever his name is. Yeah, and his colleague. Brij Bhushan Singh. Yeah, Yes, Brij Brij Bhushan. And his colleague has been made WFI chairman and she's president. She says that she's unable to continue as a wrestler. She's also a Jat. She comes from a Jat family. Correct. तो तब उनका He comes from a Jat family. Yes. And our honorable vice president never spoke about her. No. You never dare to question the Modi government ki a girl who was brought bride to our country, Yes. when she is being harassed, you have never become a voice of her. And today, very surprising, Brij Bhushan Singh was asked to resign and all, and now his own business partner has been made the president. Yes. I think this interference with sports should completely end, and has you remember Supreme Court has clearly given directives Yes. that whoever is heading the committee should not be linked to any political party. That's right. But we are seeing ki year after year the sports have been influenced by political party for their personal games. That is the reason true talent doesn't come up. Otherwise, the country of 1.4 billion people, we can get talented people in all sports. But what is happening today? Today, Bajrang Punia also went and gave his Padma Shri and the PM's outside the PM's residence. He kept it on the road and he moved out. He said, I don't want this Padma Shri. Bajrang It is Punia. very shocking. Today, I'll tell you one Who's more also a Jat, by the important way. issue. And one more important issue which I would like to raise on your platform. If you remember, Chief Election Commissioner, previously that panel was headed by Prime Minister, Chief Justice of India and Leader of Opposition. Yes. Now Modi government has removed Chief Justice of India from the panel. Yes. Now they say Prime Minister, one more colleague from his party, that is a cabinet minister, yes. and CLP. That means this meeting will never happen. Sitting at PMO, you will directly appoint a Chief Election Commissioner. That is the reason we are raising. Where is democracy in this country, sir? That's right. This is a very important issue. When you have promised that you will safeguard the democracy of this country, where is the democracy then? If you are going to appoint the Chief Election Commissioner, naturally he is going to favor you in this coming elections. That is a very important. Today, people are not understanding, but if you see, Modi government is grabbing powers, keeping all the powers in their hand, and which is very bad for democracy. Rakesh Shetty Sahab, the India Alliance, they say the India Alliance till now has agreed, had consensus only on one thing, and that was the name India. India के बारे में सबका consensus है, बाकी कुछ भी आपने तय नहीं किया है. In fact, they believe, the political pundits believe that yesterday, 2 days back, there was a master stroke when Mamata Banerjee and Kejriwal proposed Mallikarjun Kharge's name for the Prime Minister,
because that will be a fantastic bet where Mallikarjun Kharge, a well-respected leader across party lines, a person coming from the Dalit, would take on Narendra Modi, who now proclaims himself as an OBC leader. Now this would have been a fantastic fight, and preparation would be, your preparations of the India Alliance would have taken a quantum jump ahead. That yes, we have achieved something, we have achieved consensus. Now how do you see that? Did you lose an opportunity in having a consensus of the Prime Minister? Because Mamata Banerjee is number 3 vote share in as on today 2019 statistics. She's got 4% vote share, and Kejriwal has been doing, because if you see the entire opposition, they have some clout after the Congress. You miss an opportunity, Shetty sir. This India Alliance meeting which happened in New Delhi Hotel Ashoka a few days back, Yes. and this was a very serious meeting, and this is a political meeting. Naturally, so many current chief minister and former chief minister attended this meeting, and there are few things in politics that you will not disclose it for the media or for the opposition. So there are very crucial and important decisions which have taken place, and which is under the loop right now. And Sri Mallikarjun Kharge has been named as a convener also. So it's a fantastic thing, and I think a person or a grassrooted person who started his career from a block president, which is very basic for Congress, from a block president, he rose himself as AICC president. His journey is totally amazing, and such a leader, if he leads the opposition parties together, I think it will be fantastic, and it will be in 2024. This will benefit the India Alliance. Yes. Now, But when are yes. you going to do it officially? You don't have time. You're running out of time, Shetty sir. When will you do it No, officially? No. Very soon it will be decided and executed. We don't do things in a haste like how Narendra Modi do, coming at 8 o'clock and announcing Notbandi, in the night 12 o'clock announcing GST. We never do like that. We will do it in a very politically, very systematic way. We are going to announce it. So, is Mrs. Sonia Gandhi and Mr. Kharge, will they be attending the Pran Pratishtha Puja at Ayodhya on January 22nd? I believe they have been invited. Definitely. See, they have been invited, going, not going, that is one thing, but everyone should go. It is whoever is a Hindu should go there and he should attend it. And it's a very personal thing, Yes. If tomorrow there is now very soon there will be Christmas and all, you want to join there for prayers, it is up to you which religion you follow, because this is the beauty of this our constitution, because this country belongs to who believe in God and who are atheists, even it belongs to them. So, but well, as for the Ram Mandir goes, I think every Hindu will go. But there are speculations whether, as Bajaj Sahab said, Sonia ji will go or Kharge Sahab will go, because Modi ji has, the Ayodhya airport, there's going to be 100, the पूरा तैयारी जिस प्रकार से हो रहा है, दिसंबर से मोदी साहब तैयारी का प्लानिंग चालू कर दिया है कि दिसंबर एंड में बड़ा विशाल सभा वहां पर होगा, और पूरे प्लानिंग तैयारी का जो he'll take view of all what planning is going on. 22nd Jan 12:22 पे एक सक्सेसफुल प्राण प्रतिष्ठान प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से, जैसे होटल ना, every hotel in Ayodhya has been खाली करने के लिए बोला है कि और कट ऑफ डेट. You see the preparations that is going on. That is what the India Alliance should be watching. No, see, it is. I doubt whether BJP will allow any Congress leader to attend that, because जहाँ पे लोकसभा में attend नहीं करने दे रहे, राज्यसभा जहाँ पे we are elected, they are not allowing us inside. They are suspending us. राम मंदिर तो बहुत दूर की बात है. I don't think they may allow us. But in terms of the preparation of the BJP, they seem to be working to a plan like a well-oiled machine. They are working number 1, January 22nd, 12:22, Pran Pratishthan Puja, and after that there will be religious ceremonies, religious rallies, functions all over wherever Sri Ram has gone, including at Banganga over here in Mumbai, of course in Nashik at Panchvati, at Chitrakoot, at Rameshwaram, and so on and so forth.
So, what is the India Alliance plan to try and present an alternative to the people, or the Congress plan? Rakesh Shetty sir. See, now we need to understand one thing. Ki everything Bharatiya Janata Party does, it do it in a very grand manner. Yes. But is this part of the government? There is a trust, it will do its rituals. As a government, you have promised the people of Rajasthan LPG cylinder for 450. I am just eagerly waiting to see when is this plan going to be implemented in Rajasthan and in the rest of the country. But the Minister He of State spoke for about- Petroleum has said no. But the So it is Minister done now. of State for Petroleum and they- Gas, he- he has made a statement on the floor of the House where he has said that no such request has come so far. That's No, what he has but said. that means I believe that our Prime Minister is a person who will deliver. I That hope means so. he is saying ki Prime Minister of this country has bluffed. He is saying he has lied to the people of Rajasthan. That's what he is saying. And there will be revocation in the forthcoming Lok Sabha election. That means. Because you have openly promised, your hoarding were there, your manifesto clearly says that we are going to, because Congress had promised something 500 rupees for this LPG cylinder, immediately they came up with the scheme that we are going to give it 450 rupees per cylinder. And he said it is Modi ki guarantee. 5 lakh rupees for that health, Ayushman Bharat, he said Modi ki guarantee. And now all these private hospitals, since they have not been paid by Government of India from last 8 months, are completely denied. They are saying that we will not entertain Ayushman Bharat in any of these hospitals. So what happens to the promise? You are diverting the attention of these people towards Ram Mandir, but what about the real issues? What will happen to petrol, diesel, LPG? What will happen to jobs? Because inflation is all-time high. So when are you going to answer these questions? That is a real question. You know, Shetty Saab, today Mallikarjun Kharge Saab said that I condemn the Rajouri terror attack that has taken place and many of our army jawans lost their lives. Yes. He says, my sympathies are with the army, the slain people who died and were injured. The government should come clean. Just 2 days before, Amit Shah was boasting that Article 370 का वादा हमने पूरी किया, मोदी साहब ने पूरी abrogation 35A Article 370. We have given free hand to the security agencies. We have zero tolerance towards terror, and हमने जो भी वादा किया वो पूरा कर दिया है, including Ram Mandir and Article 370. Now, in one way, you have been with the government. You have said that we support the government in this hour of crisis where terror attack has taken place. But Kashmir has the policy been successful, Shetty sir? No. See, Bharatiya Janata Party has completely failed on terror front, if you see. Because they came in power in 2014. After that, Uri happened, then Pathankot was there, then there was one more, and you allowed ISI to come inside Indian border and do an inspection. So all this terror attack happened after 2014. And they have failed miserably. And very recently, 4 ordinary boys and girls enter the parliament, which is, and Home Minister is not ready to give an explanation and to answer the member of parliament. He goes out to a news channel and gives an answer, but he cannot give reply to the opposition. That is the reason this 141 MPs have been suspended. Is Today, it 141 or Hema 143? From whatever I know, it's 143, including Today they have suspended 2 more member of parliament. Yes. So Originally it was 141. Today, again 2 more MPs they have suspended. Wow. And Hema Malini was asked a question ki why opposition MPs were suspended. She said, "Ha, wo bahut zyada question pooch rahe the." This was his answer. Are, what do you mean? What you want a member of parliament to do? They should go inside the canteen and to have food over. They are leader of opposition. They are in the opposition, so they will naturally ask questions, and that is their job. What do you expect them to do? So it is very shocking. And if you see now, as we are this year is going to come to an end, and after the 1st of January, again they will put up a very big show about Ram Mandir and all. This is important, but what about the real issues? They should
target the real issues, and they have promised Chhattisgarh, Madhya Pradesh, and Rajasthan. They should fulfill that promise, but I don't think they are going to do it. You know, Shetty Saab, the Congress sometimes is more worried about Lal Krishna Advani and Murli Manohar Joshi. They're saying that what is happening to them is slightly, justice nahi hai. तो उनका कहना है, Congress, many leaders within the Congress says the founding members of the Ram Mandir movement, Lal Krishna Advani and Murli Manohar Joshi, has been sidelined. First they were invited and said not to come because your age doesn't permit you to come. आपको नहीं आना चाहिए. Then when बड़ा हंगामा हो गया तो you had the Vishwa Hindu Parishad, Alok Kumar, chief going and personally inviting them. Advani ji आपको आना है, Murli Manohar Joshi. But do you think that this particular thing that people forgetting the founding fathers, मार्गदर्शन जो मार्गदर्शन मंडल है, पैनल है, तो ये कुछ ज्यादा हो रहा है बीजेपी के अंदर? How do you see that? Because many of the Congress if you see Bharatiya Janata Party, if you see the founded by Atal Bihari Vajpayee, Lal Krishna Advani and Murli Manohar Joshi, and if you see the journey, if Lal Krishna Advani would have not started that Rath Yatra, I never think they would have come in power. Bharatiya Janata Party rose from 2 to 300. It is only because of the efforts of Lal Krishna Advani. And today, you are not ready to give him any credit. And today you have put it in Margdarshan Mandal. But the same thing is going to happen with, I will do a Bhavishwani here in your channel. Very soon, Rajnath Singh, Nitin Gadkari and Yogi Adityanath. If they get any success in 2024, which is very difficult and very difficult to achieve, but even these three members who are challenging Narendra Modi right now, even they will be in trouble. Right. Now you got a plan where the BJP is concerned. Now Narendra Modi ji is going with his entire Viksit Bharat Sankalp Yatra. 35 लाख आयुष्मान कार्ड में बांटने वाला हूं मैं, विलोजे से गांव-गांव तक संपर्क रख रहा हूं. नरेंद्र मोदी जी गारंटी, मोदी गारंटी यानी गारंटी वाले गाड़ी. ही इज गोइंग विद अ गारंटी वाले गाड़ी. मोदी जी के गारंटी यानी गारंटी पूरी होने वाली गारंटी. तो ही इज टॉकिंग अबाउट वेरियस थिंग्स एंड ही आस्क्स द पीपल दैट मैं आप लोग से 9 चीज आग्रह करता हूं. मैं आपके पास गाड़ी लेके आ रहा हूं, ये संकल्प यात्रा है विकसित भारत का. आप पानी बचाइए, गांव-गांव डिजिटल कीजिए, आप लोकल चीज को प्रमोट कीजिए, गांव शहर मोहल्ला को स्वच्छ रखिए, डिस्कवर इंडिया बिफोर यू गो. विदेश घूमने जाते हो तो नेचुरल फार्मिंग पे ध्यान दो. यू इंक्लूड मिलेट्स इन योर फूड, डेली फूड, स्पोर्ट्स, योगा को. तो हाउ डू यू सी दैट? मोदी साहब गारंटी वाले गाड़ी लेके सब जगह जा रहे हैं. एंड आपका भी शायद जोड़ो यात्रा जनवरी में शुरू होने वाला है. See, Ayushman Bharat have failed miserably because all this private hospital said since they are not getting funding from central government from last 8 months, they are not going to entertain it. And Narendra Modi is talking of the promise. What about the promise which he did just 1 month back in the election? Today, your petroleum minister has clearly stated he is not going to give any subsidy. It clearly shows that these are all political jumlas and they are not going to deliver it. So I don't think people of this country is going to trust them. Now there is an investigation going on in France in their parliament, and they clearly stated that government of India was asked about details about Rafale deal. Government of India is not cooperating. That means you are supporting corruption. And internationally, everyone is reading these papers. You can't stop that from happening. Only by saying that you have given these companies a clean sheet from Supreme Court. But internationally, this investigation is going on. And today, or it will take some more days, truth is going to come out very soon. Right. But the only thing is that as far as the economy itself is concerned, we may be in dire straits, by the way, because I think you should take a very close look at some of the figures which have come out. The International Monetary Fund has warned the government of India. There's a warning letter which has gone to the government of India about a week ago. I don't know whether you are aware of this. I'm sure you must be. That the external debt of India may exceed the entire GDP. That is, we have a GDP right now of $3.7 trillion.
our external debt may exceed $3.75 trillion, which means the Indian economy has all the potential for going into a downward spiral in another 2 to 3 years, because that debt will become uncontrollable. Now, we are not the United States of America with unlimited resources. The government of India, of course, has denied it. They've said that there is no such thing and so on and so forth. But for the IMF, which had called India the brightest spot in the world economy, to issue such a letter, I think, is very worrying. Mr. Rakesh Shetty. It is true, and if you see all the major news channels or in newspapers or Hindi media, no one is published this report and no one is talking about it. And it is a very serious issue. Yes. Because this economy, if you see, Manmohan Singh, when he came in power, the gold of this country was mortgage. Yes. And the moment he was handing over the baton in 2013 to Narendra Modi, it was a very super solid economy. Now just see in next 10 years, from 2014 to 2024 or 23, we are at 23 now, what the status of our economy has become. Because today what has happened, Narendra Modi is not focusing on this country, he is not focusing about economy, he is focusing on his friends. His priority is how to establish Bharatiya Janata Party, get it deep rooted in the system, how to have a 5-star office for Bharatiya Janata Party. Do you know any multinational? I will challenge, even McDonald's would have not set up their offices so fast. Today, Bharatiya Janata Party, in every district, I've been successfully taken by a 2-acre land and constructed 30,000 square feet office for their party with everything like IT enabled, all the state of our infrastructure. How is it possible? Where is this money coming from? Because if you see the GDP growth which have been shown very recently, yes, if you clearly monitor, maximum money has been utilized in infrastructure. And today in your channel, I am very openly saying it. They are pumping this money in infrastructure and you are receiving high kickback. Because a party, even Congress party, we are in power, you blame us for that we are in power from last 70 years. How much donation we are receiving? 300 crore. How much donation Bharatiya Janata Party is receiving? 3,000 crores. Can you see the difference? And people who are donating, you are not ready to reveal their names. You are not even transparent to show this people of this country that this is a list of people who are donating. Because the moment you publish that list, people are going to ask and analyze what favor Bharatiya Janata Party is doing to these donors. And they are going to question their integrity. That is the reason Bharatiya Janata Party is not transparent with the people of this country. This online crowdfunding that the Congress is resorting to. Now, what is it that you have changed your style of functioning where you are not taking donations directly? You want crowdfunding, you want people to involve themselves. You want to make this a national movement where you are collecting money, going to every villages and collecting money, having online crowdfunding and then, organizing your funding activities. Because I think the Jodo Yatra is going to start from January. So even that will be converted into a funding activity, online, crowdfunding activity. Now, what is the urgent need of doing this online crowdfunding? Next, I'll tell you on 20th December, we are going to complete 138 years. So, a newly elected treasurer, Shri Ajay Makanji, he came up with the idea and he requested Congress workers to donate either 138 rupees or 13,800 or 1,38,000. And Mallikarjun Kharge was kind enough to donate, Rahul Gandhi did, myself, I donated something like 13,800. As per our capacity, we are donating. And this is more of a crowdfunding, but mostly if you see, our party colleagues and party Karyakartas are donating. Extra day, there was a CWC. We have collected, extra day morning, we had collected something like 4.5 crore rupees.
That's it. Is that all? Not 450 crores? No, And then only let- 4.5 crores. And then later on 4,500 crores. No, definitely not, sir. Right. So It where was do very you sure. see this? Where do you see this going, sir? One final question, Mr. Rakesh Shetty. जहाँ तक के इंडिया अलायंस का प्रश्न है, आपको क्या लगता है कि आगे चल करके क्या आप असल में भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी जी को एक अच्छी चुनौती दे पाएंगे मई 2024 में? Definitely, I am very optimistic, and today in your program I'll tell you that in 2024 there will be a very interesting election, and people of Rajasthan, Madhya Pradesh, and Chhattisgarh, they are witness to the Bharatiya Janata Party's jubilas, because very recently they have formed the government, and as we can all see, they are not going to fulfill their promise, and which is going to benefit India Alliance is going to benefit. And very simple, if you see the statics also in Rajasthan, if you would have allied with Aam Aadmi Party and Akhilesh Yadav ji, there we could have formed the government very easily, because the difference was only 1.5% vote share. In Madhya Pradesh, we would have gained 10 more seats. Chhattisgarh, we would have again formed the government. So it is very interesting, and when I talk about India Alliance, collectively, we are far more powerful and far more honest than Bharatiya Janata Party. Right. Thank you very much, Mr. Rakesh Shetty. It's been a Thank great you. pleasure as always talking to you. Thank you so much for joining us from Delhi. Namaskar, sir. Thank you very much, and happy birthday, Pradeep ji, once again. Thank you so much. Namaskar. Thank you. Now, why is nobody talking about the IMF warning? I agree, the IMF outlook remains very, very optimistic with regard to the Indian economy. They say that GDP will continue to grow, everything else will continue to grow, but external debt, now that is a major issue, irrespective of whatever else, whichever way you might want to dress it up, Pradeep ji, because aakhir mein, your growth is being fueled by debt. Now, how are you going to repay it? Because all this stuff has to be repaid at some point of time, which, by the way, was the excuse for the BJP government when they came to power in 2014 until today, why they have not been able to lower the price of petrol and diesel. कि भाई पहले जो सब्सिडी दी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने, जब आपको याद होगा $152 पर बैरल हो गई थी प्राइस, $152, उसके बावजूद 60 के 65 रुपए पर रहा पेट्रोल और डीजल, क्योंकि आपने इसके पहले इतना ज्यादा कर्जे का पहाड़ आपने इकट्ठा कर लिया था. इसकी वजह से मोदी सरकार 2018 तक सोच भी नहीं सकती थी कि भाई पेट्रोल और डीजल कम कर लीजिए, और अभी तो सोचने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि ऑल योर स्कीम्स आर बीइंग फाइनेंस्ड फ्रॉम द टैक्स दैट यू गेट फ्रॉम पेट्रोल एंड डीजल. And the oil bonds, when Manmohan Singh was there, probably Yes. controlled everything by oil bonds, and which Modi government had to repay. Well, at least the first 2 installments on interest have been paid. There are at least a couple more. So Mr. Modi will have to invent another oil bonds to see that he buys out, to bring the prices down. I doubt it very much, but But he's not using that अरे option. भाई प्रदीप साहब देखिए, प्रदीप जी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इतनी बढ़ी हुई कीमतें, पेट्रोल और डीजल की इतनी बड़ी बड़ी कीमतें, ना जाने नौकरी नहीं है, ये नहीं है, उसके बावजूद आया तो मोदी ही, तो फिर इनको कीमतें कम करने की जरूरत क्या है? मुझे तो नहीं लगता. और अब तो श्री राम लला आ गए हैं, अब राम लला के सामने कौन खड़ा हो सकता है साहब? सवाल ही नहीं, मुझे नहीं लगता. लेट्स बी वेरी क्लियर, आई डोंट थिंक सो. एनीवे, इज मिस्टर अली दारूवाला विद अस? All right, he is at the airport and he is trying to look for a place. Well, please don't trouble him. उनको जरा तंग मत करें. अगर वहाँ पे तकलीफ है तो he can join us tomorrow. उनको बोल दीजिए please tell him that if he is finding any trouble joining us, he can always join us tomorrow. I don't want to put him in a spot. He's a very dear friend and one of the most articulate spokespersons of the BJP, Mr. Ali Daruwala. उनको बोल दीजिए अगर कोई तकलीफ है, he can always join us tomorrow. That will be fine. Have you told him that? Please tell him that. Right. That's just about it as far as tonight's show is concerned from both Pradeep ji and me. जाने के पहले Pradeep ji, shall we take a few comments? Can we take a few comments? Let's take a few comments. जी दिखाएं. We have some comments. आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. Please subscribe to the channel, like the channel, share the channel. It's your channel. यहाँ पर जो बात होती है साहब और कहीं बात नहीं होती. एक बार फिर मैं बता दूं आपको,
आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो वार्निंग दी है उसके साथ साथ ये भी कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत सेहतमंद है साहब और बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है, लेकिन साथ में उन्होंने आगाह किया है कि आप सचेत रहें कि आपका कर्जा जो है थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है। कैन वी हैव द कमेंट्स ऑन प्लीज? शाहरुख डनकी वर्सेस प्रभास सलार एडवांस बुकिंग। अब एडवांस बुकिंग क्या साहब, तो पिक्चर रिलीज भी हो गई, तो अभी तक आप एडवांस बुकिंग की बात कर रहे हैं। चलिए कमेंट तो दिखाएं। कैन वी सी द कमेंट्स प्लीज? डनकी एसआर के रोमांटिक किंग खान अब्दुल शेख, आई एग्री विद यू। अरे शाहरुख खान के आसपास कोई है नहीं साहब, जैसे पॉलिटिक्स में मोदी है, बॉलीवुड में शाहरुख खान है। बीजेपी टू ट्राई एंड ब्रेक राजीव गांधी रिकॉर्ड, एब्सोल्युटली 419 सीटें आई थी राजीव गांधी की। दिस इज अ सेंट्रल मिनिस्टर, जिल्च ऑन डेवलपमेंट, जिल्च ऑन इकोनॉमी, ओनली रविश एंड साइको फैंसी। प्रभु एपेक्स को 9372 जी। इंडिया अलायंस, लास्ट होप फॉर डेमोक्रेसी। दिस आई थिंक वाज मिस्टर चिंतामणि कारखाने, घमंडिया स्पीकिंग। कृष्ण स्वामी, कृष्ण स्वामीज 1328। चले जी आगे चलें। गमंडिया। कांग्रेस विल विन लोकसभा 2024। नाइस जोक की बेटा। ऋषिकेश करने 2212। ये जो आप शॉर्ट्स लगाते हैं उसका मुझे लग रहा है बहुत बड़े उसमें रिस्पॉन्स आते हैं बड़ा। कैन वी हैव दैट? नमो 2024, I believe it too. RA_NYK5488 जी। That's just about it. आज के शो में सिर्फ इतना ही। आप सब लोगों को प्रदीप जी और मेरी तरफ से नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर और जय सिया राम।